चलिए ठीक है, let's continue. Cis-trans खत्म करके we can quickly start with we can quickly start with ये past paper questions, ठीक है, related to isomers. किसी का नहीं, ठीक है, mic off है सारों के. अच्छा, so this one, just the last one, that's your optical isomers, ठीक है, just very quickly doing that. Optical isomers में क्या होता है कि the molecules are exactly identical. ठीक है, they look exactly identical just like your left and right hands. ठीक है, they're completely identical except they are non-superimposable mirror images of each other, which basically non-superimposable mirror images. ठीक है, उसका मतलब ये कि आप अपने लेफ्ट हैंड को जिस तरह मर्जी घुमा लो, it never actually kind of looks like the right hand. ठीक है, something is always pointing in a wrong direction. Your thumbs are pointing in the wrong direction. ठीक है, your palm might be facing the wrong direction. तो जिस तरह मर्जी घुमा लो, the two hands are non-superimposable no matter how you rotate them. So organic chemistry के अंदर you also have similar optical isomers which are known as enantiomers. So they're basically two different molecules, but they are mirrored versions of each other. और उसके लिए for that the necessary condition is that the molecule must contain a chiral center, or you can call it a chiral carbon. ठीक है, most questions are about identifying these chiral carbon atoms जिसके around ये non-superimposable mirror images form होते हैं. So what's a chiral carbon atom? It's a carbon atom which is bonded to 4 different groups. To 4 different groups. It's tetrahedral, it's sp3, it should be sp3 hybridized. So it should be sp3 hybridized. Those are the necessary conditions for having or forming these enantiomers. Okay, it's just remember the word enantiomer, that's used for optical isomers. Okay, just like your two hands are enantiomers of each other. एक और term which is sometimes used is a racemate mixture. Okay, you should also be aware of that. So racemate mixture is अच्छा, that's a mixture of enantiomers कि अगर आपके पास दोनों टाइप के, so it's known as a mixture of enantiomers. अब इसके अंदर so I'll first do an example कि we're going to try and look for chiral carbon atoms और फिर हम उनको draw करने की कोशिश करेंगे. You'll be asked to draw them, mirrored versions of each other. So let's say I have this molecule. So the molecule has यहाँ पे CH2OH है. This should have 2H. Now, if you look at this molecule, so there are all sorts of carbon atoms, but we're looking for the carbon atom which is bonded to 4 different groups, which is this one. So that's basically your chiral carbon atom. Okay, so you're going to look for molecules which have 4 different sides. मतलब बिल्कुल immediate साथ वाला important नहीं है. It's the whole side that must be different. So there's an H on the top, there's a CH2OH on the right side, there's a CH3 at the bottom, and this side by CH2, CH3. Okay, so you have to look at the whole side. So this carbon atom over here is a chiral carbon atom. Or around this carbon atom, you're going to have the molecule would exist in 2 forms around this carbon atom. Okay, is this clear to everyone? Yes, sir. So now, so the next thing is you'll be asked to draw them. So how do you draw them? You'll be drawing a tetrahedral. सिर्फ उसी carbon atom पे आप focus करोगे.
So draw the tetrahedral arrangement. Take one bond coming out of the page, the other one going into the page. And there's going to be a mirrored version of the same thing. So in the mirrored version, everything would be reflected left and right. So you have to switch everything left to right. And the dotted joiner that would become this part. This is going to be your bond that's coming out of the page and or ये section में. So this is your mirrored version. Now it doesn't really matter कि you have the molecule has four sides, ठीक है? So there's this side, and there's this side. अच्छा किसी को भी किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो पहले वाले के अंदर, ठीक है? It's up to you. H ऊपर point कर रहा है, H other point कर रहा है, doesn't really matter. So starting with the first one, you have an H. On one side, you have a CH2OH. Sometimes you'll be asked to draw displayed formula, so you show all the bonds. Achha, then there's bottom cube, I'm going to add CH3. And on one side, there is CH3, CH2. So in this other version, you're going to do the same thing, except everything would be reflected. So the H would stay at the top, okay, sif left, right, literally invert hota hai when something is mirrored. The CH2OH, उसको आपने mirror करके draw करना है, ठीक है? And you've got a CH3 over here. And on this side, you have a CH2 and a CH3, ठीक है? So that is your mirrored version of the molecule. So you'll be asked to draw or identify chiral carbon atoms, and you'll be asked to draw them. One second. So you'll be asked to identify these molecules and draw them. Now a molecule could have multiple chiral centers. तो इसके अंदर वही formula 2 to the power n का formula apply होगा कि ज़रूरी नहीं है कि there's only one carbon atom that's chiral. There could be multiple carbon atoms that's chiral. So n is the number of it's the total number of chiral carbon atoms in a molecule. तो आपके पास total number of versions आ जाएंगी of that molecule. ये हमने उसमें cis और trans में भी किया था कि cis और trans के अंदर you could have multiple double bonds that can show geometric isomers. तो उसके अंदर फिर आपके पास combinations आती थी. You could have the first one in the cis form, the second one in the cis form, the first one in the cis form, the second one could be in the trans form. तो उस molecule की different three-dimensional arrangements आती थी based on that. So chiral के अंदर भी exactly same होगा कि अगर molecule के अंदर एक से ज्यादा chiral होंगे. So what's going to happen is कि अगर दो chirals होंगे तो total possible three-dimensional जो उसकी forms होंगी there would be 4. अगर उसमें 3 chiral carbon atoms होंगे तो उसकी possible जो arrangements होंगी three-dimensional that's going to be 8. तो और अगर खाली सिर्फ एक ही chiral है तो सिर्फ 2 versions होंगी. So it all depends on the combination. So बस 2 पर n याद रखना. वो उसमें cis-trans पे भी apply होता है और वही चीज इसमें apply होगी. The other thing about this is कि when you have chiral carbon atoms, the properties can be very, very similar. Chemical and physical properties because the two molecules look exactly the same, ठीक है? जैसा आपका left और right hand है, ठीक है? The properties are kind of exactly the same. मतलब जो आप अपने right hand से कर सकते हो वो अपने left hand से कर सकते हो. So chemical and physical properties are a lot at times very similar. But chirality is very important in biology.
बल्कि extremely important in biology, क्योंकि ज्यादातर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे वेरी वेरी शेप स्पेसिफिक. खास तौर पे आपके जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स एक्सेट्रा दे हैव टू फिट इन अ सर्टेन वे. तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्लव. Your right hand would fit in one of the gloves, but your left hand would not be able to fit in the same glove. So so chirality is very important when it comes to biology because the shape is very important. Enzymes जो होते हैं, they work that way. Okay, you have an active site and the other molecule जो substrate है that has to exactly fit that active site. Otherwise it would not be able to. जब आपके bonds ही different directions में point कर रहे हैं, ठीक है, इसका bond CH2O इस left पे point कर रहा है, इसका right की तरफ point कर रहा है, so the molecules would behave very very differently. So the biggest challenge when it comes to synthesizing biological molecules is to have the correct chiral carbon atoms. तो उसमें होता है कि जब आप मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स फिगर आउट करते हो तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ना I just Google a paradol molecule. No, this one is probably not chiral. Well, let me just your molecule. तो भी अपनी इसी को पल के कर लेते हैं, ठीक है, गूगल करने में. So for example, this is a medicine molecule. The problem would be that one of them would work, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स वगैरह हैं, ठीक है, one of them would work perfectly with them, ठीक है, वो उनके साथ फिट होगा, शेप स्पेसिफिक होगा, शेप एग्जैक्टली मैच करेगी. But the other one will not function, बल्कि वो किसी और जगह जाके ना उसकी शेप किसी और के साथ मैच करी होगी, उसके साथ जाके फंक्शन कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन शुरू कर देगा. So when you synthesize biological molecules, तो जो गलत टाइप का कायरल होगा ना कार्बन आटम, रॉन्ग कायरलिटी, what it does is कि आपकी जो ड्रग डिलीवरी है ना उसको अफेक्ट करती है, ठीक है. It's going to have side effects, which is why medicine usually has side effects, ठीक है. इवन अगर लेट्स से आप वो कर रहे हो वैक्सीन वगैरह कंज्यूम कर रहे हो, तो द साइड इफेक्ट्स कम बिकॉज गेटिंग द शेप एग्जैक्टली राइट, ठीक है. बॉन्ड ने राइट जाना था, वो लेफ्ट जा रहा है, तो रॉन्ग कैरलिटी इज गोइंग टू हैव साइड इफेक्ट्स. इट वुड ऑल्सो लीड टू लार्जर डोजेस, क्योंकि अगर लेट्स से 70% जो मॉलिक्यूल्स आपने क्रिएट किए हैं वो गलत कायरल है, ठीक है, सो ओनली 30% वुड वर्क. सो दैट वुड रिजल्ट इन द कंजम्पशन ऑफ लार्जर डोजेस. और इसमें होता है कि नेचुरल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और नेचर इज वेरी गुड एट फिगरिंग आउट कैरलिटी. जब अब नेचर सिंथेसाइज करता है ना मॉलिक्यूल्स को, इट यूजुअली ऑलवेज डज. फॉर एग्जांपल, दिस इज द राइट वन, दिस इज द रॉन्ग वन. तो नेचर वुड ऑलवेज find a way. It has a mechanism of synthesizing the correct molecules. For example, आपकी बॉडी में हर अमीनो एसिड जो है ना, that's chiral. तो when you're making proteins, तो बॉन्ड ने अगर राइट की तरफ जाना CH2OH ने, वो गलत कायरल होगा तो वो लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा. सो आपके जितने भी प्रोटीन होंगे वो बॉडी के वो गलत बनेंगे. बट योर बॉडी डीएनए, वो जो भी मैकेनिज्म है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, mRNA, tRNAs एक्सेट्रा, दे फिगर्ड आउट अ वे of always producing and selecting the right type of chiral carbon atoms to create the right type of proteins. ठीक है, इमेजिन कि आपका रेड ब्लड सेल सिंथेसाइज हो रहा है और बॉन्ड्स की डायरेक्शन ही गलत है, तो वो सेल का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट. सो नेचुरल मॉलिक्यूल्स एंड नेचुरल मेडिसिन जो नेचर से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, दे यूजुअली डोंट हैव दिस इशू. साइड इफेक्ट्स वगैरह का और लार्जर डोजेस का इशू उसमें नहीं होता. लैब के अंदर जो बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे यूजुअली हैव दिस कैरलिटी इश्यूज. अच्छा चलिए, लेट्स इसको यहाँ पे छोड़ते हैं. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट विद आइसोमर्स. जस्ट रिमेंबर हाउ टू ड्रॉ दिस. तो अब हम ओवरऑल ना क्वेश्चंस करने लगे हैं, ठीक है. ये क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? No, sir.
अच्छा, फर्स्ट थिंग इज कि इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे they're going to be very time consuming, तो आइसोमर्स के खास तौर पे फॉर एग्जांपल starting with this one, वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट क्लोरोइथेन्स जिनका फॉर्मूला उसने दिया हुआ है C2H6 minus N and ClN, where N can be any integer from 1 to 6. तो if तो क्या है, कितने टाइप से क्लोरोइथेन्स है. So let's use this formula and let's figure out okay, what would happen if N is equal to 1. So the formula would be C2 H5 and there's going to be Cl1. तो कितने टाइप से क्लोरोइथेन्स होंगे. So there's going to be Cl और ये बाकी सारे H हैं जिनको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा. So there's only going to be one type of, मतलब N is equal to 1 का ना, there's only going to be one type of chloroethane, क्योंकि remember I told you कि इसका there's not going to be any isomer. Okay, if you twist it around, if you rearrange it in any way, the molecule would look exactly the same. Cl would always be at the first carbon atom. बाकी सारी जो versions होंगी, they're just twisted versions of the same thing. Then you have N is equal to 2. तो N is equal to 2 में formula क्या होगा? It's going to be C2H4 and Cl2. So how many different chloroethanes are possible? The different chloroethanes that would be possible would be कि you can have the two Cls at the same carbon atom, और ये बाकी जगहों पे ना H है. Or you could have another version of this dichloroethane where the two Cls could be on opposite carbon atoms. So there are two versions of this. Then you have N is equal to 3, so that's going to be C2H3 and Cl would be 3 as well. So how many different versions are possible for this? So it's going to be 3 Cls on one of the carbon atoms and 3 H's on the other carbon atom. Or there could be 2 Cls on one of the carbon atoms and the baki jagahon pe na they are the Cl on the other carbon atom. ये बाकी H है. So either it's 3 on one carbon atom, 0 on the other one, or it's 2 on one carbon atom, 1 on the other one. And apart from that, there is no other possible structural isomer. Then you have number of concept with them. C3 as a N is equal to 4. If N is equal to 4, then it's going to be C2 and H2 and Cl4. So how many different chloroethanes? Either they're going to be 3 Cls on one carbon atom, 4 Cls total length. So 1 Cl on the other carbon atom, and these are H. Or you could have another version where you could have 2 Cls on one carbon atom and 2 Cls on the other carbon atom, and these are your H atoms. तो या तो 3 and 1 होगा या 2 and 2 होगा. ठीक है, that is pretty much it. अच्छा, अभी तक हम किस पे, अब N is equal to 5, so that is C2 H अब 1 रह गया and Cl5. अब इसकी there's probably going to be just one version क्योंकि you've got 5 Cls and there's 1 H. So there is no other version. 5 Cls and 1 H. So 1 H को दूसरी side पे ले जाओगे, it's going to be the same thing. So there's only one version for this, and N is equal to 6. That's going to be C2H0 हो जाएगा, and Cl would be 6. So that will only have one version. उसकी और कोई arrangement होगी नहीं. So if you count them all, it's going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And you have to look out for chirality. But there is no cis-trans isomers because there is no double bond. But is there chirality somewhere? If you look over here, there is no carbon atom that's bonded to 4 different groups. There is no carbon atom. So the answer is going to be, it's going to be 9. Is this clear? Yes, sir.
As the next one, sticking to, so let's do this one. Now he's saying how many chiral centers are present in this molecule. So remember, what's a chiral center when it's bonded to four? When you have a carbon atom, when it's bonded to four different groups. तो ये CH3 वाले तो वैसे ही निकाल दो क्योंकि फोर डिफरेंट तीन तो एच हो गए. डबल बॉन्ड्स आर आउट द क्वेश्चन क्योंकि आई टोल्ड यू इट शुड बी टेट्राहेड्रल. तो again two hydrogens bonded to two hydrogens, this is bonded to two hydrogens, this is bonded to two hydrogens. ये दो भी निकल गए. So the only one left is this carbon atom. Is this chiral or not? Yes, it's chiral. ठीक है क्योंकि all four sides, and remember सारी sides देखनी, all four sides are different. ठीक है, you have to look at the entire side. अच्छा, is the bottom one chiral or not? Yes. ठीक है, again it's chiral क्योंकि this side is different. This side is different. खाली CH2 को ना देखो, there's a serial bond O as well. So I mean, look at the entire side. It's different compared to this side. And the fourth side, which is top pair, that's also different. So you've got two chiral carbon atoms, and middle wala, that's not chiral क्योंकि इसकी दो sides पे ना there are CH3s, so that is not chiral. So the correct answer is going to be, it's going to be 2. As a next question, अच्छा इस question में he's saying which compound is both chiral and also acidic. पहले तो let's just figure out which one is chiral. So if you're given 4 compounds, and but you should know that the first one, I mean, double bonds are out of the question. ठीक है, anything that's making a double bond, that's not chiral. Or carboxylic acid में carbon is also making a double bond. Carboxylic acid is double bond ON OH, so that's also obviously not chiral. Then the next one, you have CH3. So that's, I mean, that's gone. That's not chiral. Remember chiral formula. This one should have 2 hydrogens. This one will also have 2 hydrogens. So they're all not chiral. All of them have. They're supposed to make 4 bonds, so there would be 2 hydrogens. And then you have this middle one. That middle one, this one is important. That middle one, it's got, I mean, this side is different. This side is different. लेकिन उसकी ये जो sides है ना, they are both exactly the same. ठीक है, इस side से travel करो, side से travel करो, they are exactly the same. So this means this one is not going to be, it's not going to be chiral. Is this clear? Yes, sir. So the next one is you've got this molecule. So remember how to figure out condensed formula. इसको पूरा draw कर लेते हैं. It's HC O2 आ रहा है, that's double bond O and then C and H. और उसके top पे there's CH2 and Br, and bottom पे there is CH3. So this one is obviously, I mean, this carbon atom over here is obviously chiral. और ये लास्ट वाला भी कर लेते हैं कि you have इसको पूरा expand करके लिख लो कि CH, ठीक है, so that's CH, OH भी है, OH bracket में, that's a branch, and then there's carboxylic acid, so that's C double bond O and OH, and at the bottom there is CH2, so CH2 followed by C double bond O and OH. That's now this one. This one is also chiral, and it's this carbon atom that is chiral. It's bonded to 4 different groups. इस side पे कुछ और है, इस side पे कुछ और है, इधर कुछ और है. Bottom पे there's something else. So they're both chiral. C and D are chiral. Plus उसने कहा था कि which one is acidic.
So hopefully everyone knows that carboxylic acids are acidic. So the answer is going to be D. ठीक है ये clear है? जी सर. So next is forget empirical formulas. Okay, which compound shows cis and trans isomers? So क्या necessary conditions होती थी for कहाँ पे गया हमारा board? अच्छा, what were the necessary conditions for cis and trans? One second. So now the necessary conditions for cis and trans isomers were that you were supposed to have a double bond, and each of the carbon atoms in the double bond, it has to be bonded to two different groups. Okay, like this. They have to be bonded to, but this side should be bonded to two different groups, and this side should also be bonded to two different groups. So the first one is butene. I'll draw the molecule. It's going to be 2-ene means double bond is in the middle. This is 3 H's. This is 1H, 1H, and 3 H's. Is this chiral or not? Sorry, chiral cis-trans or not? Yes. Okay, this one is there's a double bond, and इस carbon atom के both sides are different. तो मतलब इसके अगर ड्रॉ करने वो आ जाएगा तो डबल बॉन्ड के इर्द शेप इस तरीके से होती है. This carbon atom is bonded to two different things. There's a CH3 and there is NH. और इस साइड पे भी there's a CH3 and an H. This one is a cis version. The other one would be इस साइड को switch कर लो. H would be pointing upwards. Next, that's number 1 is correct. Number 2 is but-1-ene. But-1-ene, you have a double bond at the start. अब ये cis-trans नहीं बनेगा क्योंकि एक साइड पे 2 H आ गए. ठीक है, but one side is correct. It has two different groups. I mean, you still have a double bond, but the problem now is that even if you draw it in a three-dimensional way, एक side switch करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The H, I mean, they're both H's. So this one is not going to be making cis and trans isomers. And then you have 2-methyl propene. So propene is 3 carbon atoms. Propene है तो double bond भी है. And second पे methyl, and meth means 1 carbon atom, so that's 3 H's. 3 H's with this one as well, and there's going to be 2 H's with this one. So again, it's obviously not going to be making cis-trans क्योंकि इधर दोनों sides पे एक ही चीज है, बल्कि इस side पे भी दोनों sides पे you have the same thing. So both sides, they should be connected to different groups. So this one is also not making cis and trans. Is this clear? Yes sir. अच्छा फिर ये वाला थोड़ा सा मुश्किल. Now this question is saying कि सारे ढूंढो जितने भी बन सकते हैं structural and cis-trans. ठीक है, of this molecule C3H4Cl2. Now one thing is when you see a molecule, तो I mean it obviously has 3 carbon atoms. अच्छा 3 carbon atoms में याद रखना कि you can't make 3 types के structural isomers थे. There was positional, there was functional group, and there was this third one which was chain isomers. 3 carbon atoms के अंदर you can't really change the chain. It's 3 carbon atoms, that's it. So you can't really do much with the chain. जो भी करना है वो position नहीं आगे पीछे करनी होगी. अच्छा तो 4 H's, and so add in the 4 H's and 2 Cl's. अच्छा now we are out of atoms. ठीक है, when you're out of atoms इसका मतलब है कि bonds अभी भी complete नहीं हुए. इसका मतलब है कि there must be a double bond. क्योंकि ये वाला जो carbon है और ये वाला जो carbon है, that's, I mean, the bonds are not complete, so put in a double bond. ठीक है, so there has to be a double bond in this
in this molecule. It's going to be an unsaturated molecule. अच्छा ये मैंने एक वर्जन ड्रॉ कर लिया. Now change करने का तो कोई फायदा ही नहीं है. The only thing that you can do is you can just keep on changing the position of the Cls and H. तो और ये बहुत सारे बनेंगे. अब अगला ट्राई करो कि what could be the other combination के दोनों Cls एक ही कार्बन पर लगाए हुए थे. Cls की पोजीशन जो है ना वो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द कर देते हैं. ठीक है. So that's another version. अच्छा और क्या हो सकता है कि अभी Cls डबल बॉन्ड के ऊपर लगे हुए हैं. अभी हो सकता है कि अच्छा सेम थिंग Cl यहाँ पे लगा हुआ है तो I'll put a Cl on the extreme left और ये बाकी मेरे H है. अच्छा और क्या हो सकता है कि देयर इज डबल बॉन्ड. अच्छा Cl इस राइट वाले एंड से हटा देता हूँ इसको इन दो कार्बन पे लगा देता हूँ पहले which are not making double bonds. ठीक है. मतलब remember this is different from this one. This was Cl's around the double bond. This is Cl's not around the double bond. और एक और कॉम्बिनेशन बन सकती है. कोई बता दे मुझे कौन सी फिफ्थ कौन सा होगा. डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बल्कि और किसी होगा. बट डबल बॉन्ड को भी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सर दोनों सीएल लास्ट कार्बन पे. ठीक है. एग्जैक्टली द लास्ट वन कैन बी कि यू कैन हैव बोथ Cls ये आखिरी वाले कार्बन आटम पे और ये H. अच्छा ये आपके पास ना 5 अब ये बने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. अब इनमें से देखना है कि वो कौन बना रहा है. Cis-trans. So which one is making cis and trans? The first one is definitely not double bond. ठीक है. उसके साथ दोनों साइड्स पे Cl or Cl attached है, so that's not making cis-trans. This one. ये बनाएगा. ठीक है. This one is going to make cis and trans. यानी इसकी दो वर्जन मतलब इसको दो काउंट करना है. एक इसकी cis वर्जन होगी और एक इसकी ट्रांस वर्जन होगी. ठीक है. सो रिमेंबर दिस इस मॉलिक्यूल को दो काउंट करने हैं. अच्छा व्हाट अबाउट दिस वन. ये भी मेरे ख्याल से बना रहे कहीं बना रहा. ठीक है. क्यों नहीं इसके दो ये वाले दो ग्रुप्स डिफरेंट है इस साइड पे और इस साइड पे भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है. मतलब इसके अगर दोनों वर्जन ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस के डबल बॉन्ड बनाने और ये उसकी शक्ल होगी. ये दूसरी वाली वर्जन होगी डबल बॉन्ड. ठीक है. ट्रायंगुलर प्लेनर. अच्छा इस साइड पे Cl और H अटैच्ड है तो देयर Cl एंड देयर H और उस साइड पे देयर इज H और CH2Cl है. तो ये जो दूसरी वर्जन होगी ना उसमें एक साइड को तो उसी तरह रखो. ये वाली साइड जो है ना Cl ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको नीचे की तरफ ले आओ. तो दिस वन इज the trans version क्योंकि the H are pointing in opposite directions, the H are pointing on the same side, so this one is the cis version. अच्छा उसके बाद सो ये भी दो काउंट होंगे. मतलब इसकी एक cis वर्जन होगी और एक इसकी ट्रांस वर्जन होगी. मतलब दो मॉलिक्यूल्स होंगे. दिस वन इज नॉट गोइंग टू मेक cis trans क्योंकि दोनों साइड सेम है. ये भी दोनों साइड्स H लगे हुए हैं तो सेम है. तो टोटल हमारे पास कितने आइसोमर्स हो गए. वी हैव 1. इसको दो काउंट करना है तो 2 3 4 5 and 6 and 7. So the total number of isomers are going to be 7. Clear है ये. जी सर. यस सर. अच्छा ये वाला वो कह रहे हैं कि इन दोनों के पास कितने कितने कायरल सेंटर्स हैं. तो ये पता कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को तो वैसे ही निकाल दो बीच में से. 1 second. Just hold on a second. अच्छा तो
कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन तो वैसे ही निकल गया, ठीक है। सीरियल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड आ गया, दैट्स नॉट काइरल। दिस इज ऑल्सो गॉन, क्योंकि इसका दो एच लगे हुए हैं। ये नीचे वाले भी चले गए दोनों, ये भी चला गया, पीछे ही रह गया एक। अच्छा, इज दिस काइरल और नॉट, मतलब इस सी के साथ ना ब्रैकेट में एक OH लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, एंड द टॉप एंड द बॉटम आर एग्जैक्टली द सेम। ये भी कायरल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट काइरल, क्योंकि वो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड एग्जैक्टली सेम है, तो इसमें इसमें देयर इज नो काइरल। ये एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, इसमें कितने काइरल्स होंगे? ये ऊपर वाले तो दोनों निकल गए, इसका दो एच लगे हुए हैं, उसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। सो सी एच सी कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे क्या है, CH, और फिर OH की भी ब्रांच है, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी उसी पे लगा हुआ है, एंड टॉप इज CH2। तो हाउ मेनी काइरल्स, इज दिस काइरल और नॉट? यस। ठीक है, ऑल फोर साइड्स ऊपर नीचे सब डिफरेंट है। दिस वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी काइरल। सारी साइड्स, टॉप वाली डिफरेंट है, नीचे तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो टोटल जो काइरल सेंटर्स होंगे दैट्स गोइंग टू बी टू, तो जीरो एंड फर्स्ट वन इज जीरो, द सेकंड वन इज टू। और इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो होगा ना, ये फोर डिफरेंट थ्री डायमेंशनल शेप्स में एग्जिस्ट करेगा। ये प्लस माइनस हो सकता है, मतलब या तो ओरिजिनल शक्ल में होगा या मिरर्ड वर्जन में होगा, सो टू कॉम्बिनेशंस होंगी इसकी। ये भी प्लस माइनस, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में या मिरर्ड वर्जन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दे बोथ कैन बी कायरल। अच्छा, लेट्स अच्छा, दिस वन इज वेल। Okay, the question states how many alcohols, including structural and stereoisomers, can have the molecular formula C4H10 and O. As the first thing is you have to be very careful because there's a limitation. It has to be an alcohol. It has to have an OH. तो चार कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन हैं और OH होना मस्ट है। पहले तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये सारे आपके पास H के एटम्स हैं, और 10H पूरे हो रहे हैं, ठीक है, यू कैन काउंट द H। अच्छा, दैट्स वन। अब इसके अंदर दोनों काम कर सकते हो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आपने इस पे नहीं करना, क्योंकि यू हैव टू मतलब इट हैज टू ऑलवेज रिमेन इन अल्कोहल, ठीक है। तो आप वो चेंज नहीं कर सकते, OH को चेंज नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू कुड चेंज इज यू कैन चेंज द नंबर ऑफ द ब्रांच या चेन आइसोमर्स बना सकते हैं, या पोजिशनल आइसोमर्स। So you can change the position of the OH to the second one. अब वो second one third one पे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि it would remain exactly the same. It would just be a flipped version of the same thing. तो चार कार्बन एटम्स लाइन के अंदर है ना, तो आपके पास ये दो आइसोमर्स बनते हैं पोजिशनल। अब कार्बन एटम की ना वो चेंज कर दो आप, ब्रांच चेंज कर दो, ठीक है, यू ऑल्टर द ब्रांच। नाउ इन दिस केस you can have OH here and you can have या जो OH है ना वो ये बीच वाले कार्बन आटम में लगा दो, ठीक है। दैट्स इट। क्योंकि OH कहीं और लगाओगे ना, दैट्स जस्ट अ रोटेटेड वर्जन ऑफ द सेम थिंग। मतलब ये OH यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, इट्स बेसिकली द सेम थिंग, जस्ट द सेम मॉलिक्यूल रोटेटेड अराउंड। तो OH या तो ये एंड वाले किसी एक कार्बन पे आटम पे लगा होगा या बीच वाले पे लगा होगा, दैट्स इट। सो you've got four structural isomers. अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा स्टीरियो आइसोमर्स बना रहा है? और सिस ट्रांस तो हो नहीं सकता, दिस ऑप्टिकल। मुझे मैं H ऐड कर दूं, सेकंड वाला। ठीक है। द सेकेंड वन, ये सारे H है, ये इसके साथ H है।
The second one over here is chiral. ठीक है, क्योंकि इसके एक साइड पे CH3, एक साइड पे CH2 CH3 H on top, OH at the bottom, तो यानी इसकी दो वर्जन होंगी. ठीक है, इट शुड बी काउंटेड एज टू. एक वो ओरिजिनल फॉर्म होगी और एक उसकी मिरर्ड वर्जन होगी. एंड इज देयर एनीवन एल्स हुज मेकिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स? ये वाला तो डेफिनेटली नहीं बना रहा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों एच लगे हुए हैं. ये वाला भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बना रहा, क्योंकि ओवर हियर देयर इज अ CH3, इधर भी CH3 है. तो अच्छा, सिमिलरली दिस वन इज नॉट मेकिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स बिकॉज तीनों साइड्स पे CH3 है. So four different groups किसी में भी attached नहीं है. So it's only this one. So the total number of structural and stereo, ये एक हो गया. इसको दो में काउंट करना है. ठीक है, there would be two versions of this. So तीन ये हो गए. तो 1 + 2 3 4 and 5. So the answer is 5. Clear है? Yes, sir. अच्छा, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा which will have optical isomers. बस उसने कहा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स इनमें से कौन बना रहा है. इसका मुझे बता दे कोई कि बना रहा है, और अगर बना रहा है तो कितने बना रहा है. मतलब हाउ मेनी chiral centers does it have? 2, 3. ठीक है, थ्री इज द, मतलब एक तो पहली बात है वो बना रहा है. ठीक है, और 3 होंगे क्योंकि ये भी chiral है, क्योंकि इसकी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सारे डिफरेंट है. ये वाला भी chiral है. ठीक है, क्योंकि इसके टॉप पे कुछ और अटैच है, बॉटम में कुछ और अटैच है, राइट लेफ्ट सारे डिफरेंट है. एंड दिस इज ऑल्सो chiral, कि इसके इधर खड़े होकर अगर देखो ना तो टॉप डिफरेंट है, राइट लेफ्ट बॉटम सारे डिफरेंट है. सो द 3 chiral, यानी इसकी जो 3 dimensional अरेंजमेंट्स होंगी ना 8 होंगी टोटल. देयर वुड बी 8 फॉर्म्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल. अच्छा, बट एनीवेज उसने क्वेश्चन में सिर्फ कहा हुआ था कि chiral है कि नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो बना रहा है. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? Chiral optical isomers तो नहीं बनाता अगर नहीं, chiral compound हमारे पास. नहीं, chiral का मतलब ही ऑप्टिकल आइसोमर्स बना रहा होता है ना ये. ओ नहीं, cyclic, sorry. नहीं, साइक्लिक का मैंने उसका सिस-ट्रांस का बताया था, ऑप्टिकल का नहीं. जो किधर गया, यहाँ पे कहीं एंड में मैंने मेंशन किया था ये, लेकिन मैंने सिस-ट्रांस के लिए कहा था कि सिस-ट्रांस के अंदर ना, अगर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड दैट्स फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिस-ट्रांस, तो आप उसकी दूसरी वर्जन फिर भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो फ्लिप ही नहीं कर सकते. क्लियर है? ऑप्टिकल के लिए नहीं है वो. ठीक है. Okay. अच्छा, सो दिस वन, इसके अंदर कितने कैरल्स हैं? इसके अंदर एक तो ये होगा, 1 सेकेंड. अच्छा, एक तो ये कैरल होगा बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी एन एच, मतलब फोर्थ बॉन्ड. ये साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट चीजें आ रही हैं वहां पे. सो दिस वन, और टॉप भी डिफरेंट है और वो एच भी डिफरेंट है. ठीक है, सो ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट. तो एक तो ये वाला कैरल हो गया. ठीक है, दैट इज कैरल क्योंकि ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट. ये कैरल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ दो एच होंगे. दिस वन विल आल्सो हैव 2 एचेस. दिस विल हैव, किधर गया एच? अच्छा, दिस विल आल्सो हैव 2 एचेस. अच्छा, ये कैरल होगा क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी एन एच, और साइज साइज डिफरेंट है. मतलब यहाँ पे जो कार्बन चेन है दैट्स डिफरेंट कंपेयर टू दिस कार्बन चेन, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वहां पे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं. OH and H. So this is also chiral, and this one over here is also chiral, ये वाला. क्योंकि इसके इधर खड़े होकर अगर देखोगे ना तो बॉटम पे कुछ और है, राइट साइड पे ये CH OH वगैरह चीजें आ रही हैं, दैट्स डिफरेंट. दिस साइड इज डिफरेंट क्योंकि यहाँ पे OH नहीं आ रहा,
और एक इसके साथ भी ना एक फोर्थ बॉन्ड होगा, दैट वुड बी विद H. तो इसके अंदर भी देयर 3 कायरल्स. अच्छा बट एनीवेज उसने सिर्फ कहा था कि कायरल है कि नहीं है, तो वो है. क्लियर है ये सेकंड. जी. एंड देन द लास्ट वन, इसमें डबल बॉन्ड, ये वाला भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है. तो मतलब कोई भी कायरल नहीं होगा, ठीक है. इट इज नॉट सपोज टू बी मेकिंग डबल बॉन्ड्स. अच्छा ये तो ये हो गया कोई. एक सेकेंड. अच्छा इसका कर लेते हैं कि हाउ मेनी chiral centers are present in this molecule. तो the number of chiral centers in this molecule is one of them is here. इसके अलावा ये वाला भी chiral है. ठीक है, just two. ये वाले डबल बॉन्ड्स वैसे ही निकल गए बीच में से. They can't form chiral. इसके साथ 2H आ गए, that's not chiral. इसका all sides are different. मतलब 3 साइडें तो different है, एक साइड पे H है. इसकी भी ऊपर टॉप बॉटम राइट साइड वो एक H भी लगा हुआ है, ठीक है. That's different. So there are 2 chirals. अब फिर उससे कहे कि this one, what is the number of isomers C2H2Cl2 including cis-trans for this molecule. बस ये लास्ट करते हैं कि कितने different cis and trans isomers are possible. तो it's C2, 2 Cl लगा दो, 2H लगा दो, ठीक है. that's और से क्या है सारे including cis-trans. तो there has to be a double bond, वरना bonds पूरे नहीं होंगे. अच्छा that's version number 1. Version number 2 is कि you have a double bond or Cl's opposite ends में. I mean that's the only other possibility कि या तो दोनों Cl's एक ही कार्बन पे अटैच्ड हैं या दोनों Cl's opposite sides पे अटैच्ड हैं. इनमें से एक जो है ना वो cis trans बना रहा है, वो कौन सा, लेफ्ट और राइट? राइट वाला. ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये दोनों साइड्स डिफरेंट है और यहाँ पे भी दोनों साइड्स डिफरेंट है. तो बेसिकली इसकी 2 वर्जन्स एग्जिस्ट करेंगी. वन वुड बी सिस, द अदर वन वुड बी ट्रांस. सो इन टोटल यू विल हैव 3. मतलब एक ही है और इसकी 2 वर्जन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो 3 हो गए टोटल. चलिए ठीक है, आई विल बी पोस्टिंग दिस वर्कशीट. इसमें सिर्फ वो देख लेना आप आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस. ओके सर. ठीक है, ये मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा और जस्ट गो थ्रू देम. ठीक है, ओके देन एवरीवन, टेक केयर. ओके सर. अल्लाह हाफिज.